गुड मॉर्निंग नम्रा। गुड मॉर्निंग। पीपीटी इज शोइंग। ठीक, वेट करिए बस, थोड़ा और टाइम हो जाए तो हम स्टार्ट करते So now entire syllabus is covered and all topics are also covered. So I am going to start the important topic as revision. जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो उनको मैं एज ए रिवीजन हैंडल कर रहे हैं, देख रहे हैं। उसके अलावा आपको भी जो लग रहा है, जो भी टॉपिक दोबारा हम लोग को डिस्कस करने चाहिए, वो भी आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप करके बता सकते हैं और उसको हम लोग लेक्चर में इंक्लूड कर लेंगे।
Okay, so today I am going to discuss about the network topology. So first of all, what is a network? So when you have two or computer connected to each other, then it means that it is established a network. Means you can say that you have a network. Two or more computer connected to each other are sometimes known as these structure or work as a network. The purpose of network is to enable the sharing of files and information between multiple systems. So next question rises, what is the need of network? So need of network is to exchange information, file, data from one terminal, from one source to another terminal or source. So there is a, you can say that capital I internet could be described as a global network of networks. जब इंटरनेट की बात करते हैं तो it is also network, but it is known as network of network, जिसको हम लोग इंटरनेट के नाम से जानते हैं. Computer network can be connected through cables such as Ethernet cable or phone line or wirelessly. There are two types of connection or network establishment. These are either wire oriented, connection oriented, or wireless, connection less, using wireless networking card that send and receive data through the air. And there are also some internetworking devices used to do that. Okay, so first of all, what is a network? Now come to the network topology. So what is topology? Topology, you can say that physical and logical network layout of the network. Topology is the method or technique. Topology, you can also say that this is a type of technique to establish your network. Yeah, you can say that it is a method to connect two or more devices which known as network. Then for any techniques which is suitable for our work to exchange information. So this type of technique is known as topology. What is physical? Actual layout of the computer cable and other network devices is known as physical. Logical, the way in which the network appears to the device that use it. Means logical, you can say that it is connected, एक तो आप सबको दिखता है, by the means of either internetworking device, these are hardwares, or the cables, modem, hubs, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोई भी केबल के थ्रू आपने कनेक्ट किया. दूसरा जो हम समझते हैं कि जब हम केबल से तो कनेक्ट कर देते हैं, बट इट इज आल्सो कनेक्टेड थ्रू नेटवर्क आईपी एड्रेस, सबनेट, इसके थ्रू भी आप इसको कनेक्ट कर देते हैं. तो दिस इज नोन एज लॉजिकल. इनका डोमेन नेम सिस्टम बना करके मैपिंग कर देते हैं. दिस इज आल्सो वे ऑफ लॉजिकल कनेक्शन. ठीक. Next, why does the topology or shape of network needed or the matter? There are number of reasons. First one is impact performance. So topology is used, technique is used, or we also care about the shape of network, mainly that it is matter of performance of the established network. There is also a factor in determining the media type. Our next topic will be transmission media. After discussing topology and OSI model, next topic will be transmission media. So media type, either guided or unguided media. There are also guided media means physical connection, unguided media means wireless connection. So guided media में twisted pair cable है, optical fiber है, coaxial cable are there. And when we talk about unguided media, these are infrared,
माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स, तो वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे. बट द फैक्टर इन डिटरमाइनिंग द मीडिया टाइप यूज टू केबल नेटवर्क also impact the cost of cabling the network. There is also matter of cost, performance, as well as you can say that media type and also cost. Cost what important matter यहाँ पे होता है during the choosing of technology or the topology or the shape of network. And also some access methods can work only with a specific topology. There are also some access methods which depend upon the type of topology used in establishing a network. This is also type of network topologies types. There are different types of network topologies. We already studied that these are bus topology, ring topology, star topology, tree topology or mesh topology. Bus, ring, star, tree and mesh. These are the various categories of network topologies we studied in detailed lecture in context of unit 1. So these are the technologies: bus, ring, star, tree and mesh. ठीक है. By using the diagram you are able to understand or see the establishment of network topologies. यहाँ आप देख पा रहे हैं फर्स्ट वन इज स्टार टोपोलॉजी. वहां पे एक सेंट्रल मशीन होती है या हब होता है, उसके थ्रू सारे सिस्टम कनेक्टेड होते हैं. मेश टोपोलॉजी इज देयर. उसके बाद रिंग टोपोलॉजी है, वो चारों कनेक्टेड होते हैं. फुल्ली कनेक्टेड एक नेटवर्क है जिसको हम लोग हाइब्रिड, यू कैन से दैट हाइब्रिड टोपोलॉजी, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टोपोलॉजी नोन एज हाइब्रिड टोपोलॉजी. चाहे उसमें स्टार और मेश का कॉम्बिनेशन हो, स्टार रिंग का कॉम्बिनेशन हो, बस और रिंग का कॉम्बिनेशन हो, दिस इज नोन एज हाइब्रिड टोपोलॉजी. देयर इज आल्सो ट्री टोपोलॉजी इन विच hierarchical representation of devices arranged or the parent child relationship also mentioned. There is a line topology. Line topology, you can say that all the devices are connected through a line. There is slight difference between bus topology and line topology. Bus topology में एक line आती है केबल की, उसके थ्रू each and every node connected to that particular line. ठीक है. और वो ऊपर नीचे लेफ्ट और राइट किसी भी, अब कह सकते हैं डायरेक्शन में हो सकते हैं, लेकिन लाइन टोपोलॉजी में एक लाइन से सीरियली डिवाइसेस आपके कनेक्टेड होते हैं. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज लाइन टोपोलॉजी. बस नेटवर्क टोपोलॉजी, you can understand by this diagram. This is bus network topology. There are 5 nodes or the system are arranged. 3 are arranged per side of the line and the 2 nodes are connected or arranged in the lower side of that particular line. Now come to the features of bus topology. A bus topology is type of network setup where each computer and network devices are connected to a single cable, or you can say that sometimes known as backbone. A bus topology is a type of network setup where each computer and network device are connected to a single line or the backbone. एक मैंने आपको लाइन दिखाई थी, सीधे सीधे सीरियल केबल चली जा रही है और उसके बाद फर्दर नोड कनेक्टेड है, फर्दर नोड आपके कनेक्ट होते हैं. बस टोपोलॉजी इज आल्सो समटाइम नोन एज अ मल्टी पॉइंट कनेक्शन. एक्सक्यूज मी. Bus topology is also known as multi-point connection. So by the diagram you are able to see that there is a line which is in the blue color and जो green color के कैप लगे हुए
This is the backbone or the single cable line. यार ग्रीन कलर का जो कैप लगा हुआ है एरो साइड, दिस इज नोन एज टर्मिनेटर, बोथ साइड जो है वो टर्मिनेटर है। एंड जो ब्लू कलर के आप देख रहे हैं बॉल्स, दीज आर द नोड्स दैट आर कनेक्टेड बाय द लाइन or the single cable or the backbone in the different direction. There is no fixed direction. These can be connected through a different direction. ये हम लोग क्या प्रैक्टिकली भी हम लोग ने सबने जो है देखा है, पॉज किया है। जैसे अगर किसी के यहाँ सपोज करिए पाइपलाइन बिछी हुई है, वाटर पाइपलाइन that is connected to a tank which is situated at the roof of house, और उसके बाद पूरे फ्लोर में 3 to 4 जो है फ्लोर का आपका हाउस है, तो उसमें हर जगह आपका जो है वाटर सप्लाई जा रहा है। तो ऑल द नोड्स और द यू कैन से दैट नल जो भी है या जो भी टैंक जो आपकी जो है कनेक्शन है वो बस टोपोलॉजी के थ्रू ही मेंशन होते हैं। एक सिंगल लाइन होती है और उसी में कनेक्शन आपके चले जाते हैं। ठीक है, जहां जिसकी जैसी भी जरूरत है ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं भी आप कनेक्ट उनको कर सकते हैं। This is the arrangement, या this type of arrangement, this kind of arrangement is known as the bus topology. The bus is the data link in a bus network. How bus topology works? First point, the bus is the data link in a bus network. The bus can only transmit data in one direction. It is the main attribute or the characteristic that bus can only transmit that data in a unidirectional mode, and if any network segment is severed or network transmission ceases, कोई भी कहीं भी कोई प्रॉब्लम होगी, कहीं कोई भी दिक्कत होगी तो all network transmission will be ceased. A host on a bus network is called a station or workstation. जो भी कोई होस्ट होगा उसको हम लोग या तो स्टेशन कहेंगे या वर्क स्टेशन कहेंगे। इन अ बस नेटवर्क एवरी स्टेशन रिसीव्स ऑल नेटवर्क ट्रैफिक, receives all network traffic. The traffic generated by each station has equal transmission priority. The traffic which you are able to see in your diagram in the right corner, बिल्कुल आप देखिए राइट कॉर्नर पे नीचे डायग्राम देख पा रहे हैं, तो ट्रैफिक जनरेटेड बाय ईच स्टेशन हैज इक्वल ट्रांसमिशन प्रायोरिटी। यहाँ पे कोई भी प्रायोरिटी सेट नहीं होती है, सबको इक्वल प्रायोरिटी पे रखा जाता है। बट स्टिल देयर इज ड्रॉबैक ऑफ दिस बस टोपोलॉजी दैट इफ वन नोड इज इन्फेक्टेड और द इन द एनी लाइन, जो भी आपकी कहीं लाइन है अगर वहां से इन्फेक्ट है या किसी एक पर्टिकुलर नोड के पास ज्यादा यू कैन से दैट ट्रैफिक है तो अदर्स नोड विल बी सफर्ड, क्योंकि वो लाइन के रिसोर्सेज पहले उसने यूज किए हैं। तो ये आपने पाइपलाइन में भी देखा होगा, जो मैं पाइपलाइन की एग्जांपल बता रहा हूँ इन द वाटर टैंक सप्लाई, वहां पे भी अगर सबसे नीचे फ्लोर पे अगर कोई भी आपका नल या कोई भी जो है पॉइंट अगर ओपन है तो ऊपर वाले चाहे वो सेकंड फ्लोर का हो थर्ड फ्लोर का हो, दीज पॉइंट्स विल सफर। Advantages of bus topology. There are different and various advantages of bus topology. First one is easy to connect a computer node or peripheral to a linear bus. It is very easy to connect a computer or peripheral to a linear bus. Second, it's require less cable length. Is require less cable length than other topology such as star topology, which will be discussed later. It works well for small network. It is very good and useful for small network. When there is scope of big network and the number of workstation is too much, then this topology will not work, because जैसे जैसे जो पास के नोड होंगे वो तो आप कह सकते हैं स्पीड अच्छी होगी, रिस्पांस भी अच्छा देख पाएंगे, उनको रिसोर्सेज अच्छे मिल पाएंगे।
लेकिन जो फर्दर के जो नोड्स होंगे वो अच्छा रिस्पांस नहीं दे पाएंगे। इसलिए ये जब बहुत बड़ा नेटवर्क आप होगा आपका, तो वहां पे ये इफेक्टिव नहीं होता है। Disadvantages of bus topology. There are different and many disadvantages of bus topology. There are only slight advantages of bus topology, but disadvantages of bus topology is too much. First one, entire network shuts down if there is a break in the main cable. I already told you and also show with the help of an example that it is connected by a backbone or the single cable. So if there are any fault in cable, the entire network will shut down. Terminators are required at both ends of the बैकबोन केबल। ये भी बहुत जरूरी बात है कि दोनों जहां पे भी आपके टर्मिनेटर लगे हैं, they are also work in progress, they are also effective and they are also required at both side, both end पे टर्मिनेटर बहुत जरूरी है, अदरवाइज शॉर्ट होने का भी डर रहता है। देयर में बी सम कॉजेस दैट योर नेटवर्क लाइन विल बी शॉर्ट or the burst. Difficult to identify the problem if the entire network shuts down. So there are some cases this problem may arise, not meant to be used as a stand-alone solution in a large building. I already told you in the concept of water supply. तो ये बहुत इफेक्टिव नहीं होता है लार्ज बिल्डिंग में या लार्ज नेटवर्क के लिए। इट इज स्लो व्हेन मोर डिवाइसेस आर एडेड इनटू द नेटवर्क। दिस इज आल्सो डिस्कस्ड द डिवाइसेस व्हिच आर एडेड और कनेक्टेड एट द नियरेस्ट ऑफ द लाइन, दिस विल परफॉर्म वेरी गुड एंड द डिवाइसेस व्हिच इज आफ्टर द अदर डिवाइसेस, जो बाद की डिवाइसेस हैं, मे बी their response will be poor comparison with the previous devices connected to the backbone of the line or the main cable. You can say that it is slow when more devices are added to network. If a main cable is damaged, then the network will fail or be split into two networks. There may be some cases तो two network होगा and these are broken down between two or many places, तो वो कोई भी काम नहीं करेगा। ठीक है, तो अगर कहीं भी मेन केबल आपकी डैमेज होगी तो वो नेटवर्क का स्प्लिट तो हो जाएगा लेकिन वो वर्क नहीं होगा। मेन पार्ट में भी अगर हो सकता है तो कहीं ना कहीं काम करता रहे, सप्लाई होती रहे या उसका परफॉर्मेंस पुअर हो तब भी वो हो सकता है काम कर पाए, बट आफ्टर जो बाद के डिवाइसेस होंगे वो काम नहीं करेंगे। मे बी देयर आल्सो सम केस दैट एंटायर डिवाइसेस में be also not functioning properly. Some applications of bus topology that is used for broadcasting the message. Most computer motherboards used in LAN. जो previous आपका motherboard आता था उसमें भी बस लगी होती थी, आपने कंप्यूटर आर्किटेक्चर में पढ़ा होगा बस कॉन्फ़िगरेशन। LAN की बात होती है जब स्मॉल नेटवर्क आपका होता है तब भी हम लोग बस टोपोलॉजी ही यूज करते हैं। जो जहां छोटा लैन होता है, स्मॉल एरिया, स्मॉल बिल्डिंग पे या स्मॉल आई इंटरनेट जहां पे आप बात करते हैं, वो वहां पे बस टोपोलॉजी यूज हो जाती है। नाउ कम टू द अनदर टाइप ऑफ टोपोलॉजी, दीज आर नोन एज स्टार टोपोलॉजी। सेकेंड टोपोलॉजी इज स्टार टोपोलॉजी। Star topology. By the example or the diagram you are able to see that there are star का मतलब ये हुआ कि there are a central machine or the networking devices placed at the center and the all machines are connected to that center devices or the networking devices, inter-networking device. So this type of arrangement is known as, this type of network architecture is known as in the form of topology as star topology. So by the diagram you are able to see
that there are 3 computer machines and 1 printer, 4 computer machines and 1 printer are attached by the hub which is centrally placed. So now come to the star topology. About the, you can say that the main terminology and the components. All the components of network are connected to the central device called hub, which may be a hub, a router, or a switch, or you can say that any internet networking devices which is centrally placed, and all other devices, whether it is workstation or any resource in the form of printer, scanner, कोई भी हो वो उसके साथ अटैच हो सकता है by the central, you can say the networking device, device known as hub. There is no direct traffic between devices. There is no direct traffic between devices. Devices are connected by the means of central networking devices known as hub. The switch is the server and the peripheral are the clients. In that type of arrangement, the switch is the server and the peripheral are the clients. The star topology reduces the damage caused by line failure by connecting all of the system to a central node. Next, disadvantages of star topology. There are different disadvantages of star topology. First one, too much dependency on central device that has its own drawback. So main drawback or main disadvantage ये है कि क्योंकि I already told you all the devices are connected to a central system or the networking device or the hub. So too much dependency or central device had its own drawback. If the main central system or the hub will fail, the entire network goes down. Second point refers, if hub fails, whole network goes down. The use of hub, a router or a switch as central device increase the overall cost of network. अगर आप ये ऐड कर लेंगे तो इन द एडिशन ऑफ केबलिंग, वायर और अदर कनेक्टेड मीडियम, द स्पेशल डिवाइस known as hub, router or switch will also increase your overall cost of the network establishment process. Performance and number of nodes which can be added in such topology depend on the capacity of central device. जितनी ज्यादा अच्छी कैपेसिटी सेंट्रल डिवाइस की होगी, परफॉर्मेंस उतना ही अच्छा होगा नेटवर्क का, और नंबर ऑफ नोड्स will also be connected at that central system. Application of star topology. Star topology is also used in LAN. In addition, the using of bus topology, some organization or the company also used star topology as establishing in LAN. High speed LAN often use star topology. हाई स्पीड लाइन में भी स्टार टोपोलॉजी आपकी यूज होती है टू अ लार्ज एक्सटेंट. नाउ कम टू द अनदर टाइप ऑफ टोपोलॉजी. दिस इज नोन एज रिंग टोपोलॉजी. इन द डायग्राम which is now in your screen, there is a ring configuration of computer system. There are 4 computer system are connected to form a ring. And you can also set the direction of ring by default, or it is observed that the direction of flow of messages or the direction of, you can say that the message passing is clockwise, but you can also set as per your convenience. Maybe you can say that also in the anti-clockwise direction if there is any type of requirement. So now come to the discussion about the ring topology.
devices are connected to each other in a circular shape. As diagram is also placed in the top corner, top right corner. All devices or workstation are connected to each other in a circular shape. Each packet is sent around the ring until it reaches its final destination. I also deduced about the IEEE 802.4, that is project name, that was token ring. So token ring also work on the concept of ring topology. उसमें भी आपका रिंग टोपोलॉजी के फॉर्म में ही आपका डेटा ट्रांसफर होता है, और उसमें जो आपका मैसेज है वो पैकेट है वो चारों साथ जितने भी डायरेक्शन, यहाँ पे चार आपने सिस्टम देखे थे इन द डायग्राम यू आर एबल टू सी देयर आर 6 नोड्स. योर पैकेट इज revolve around the ring until it reaches its final destination. Data travel from node to node with each node along the way handling every packet. It is also depend the way of handling each and every packet, and also there are set rules and the priority कि किस पैकेट को होल्ड करके रखना है, किसको फर्दर पास करना है. There is also type of network establishment in the ring type of topology. So now there are different advantages, various advantages of ring topology. First, ring topology is very organized. Second, each node gets to send the data when it receives an empty token. Okay, this I already introduced the topic of टोकन रिंग. टोकन रिंग में क्या होता है, एक टोकन रिवॉल्व होता है. जब भी कोई भी नोड उस पर्टिकुलर टोकन को अचीव कर लेता है, वो डिपेंड करता है अबाउट द प्रायोरिटी एंड रिसोर्सेस टाइम अलॉटमेंट, वो उस पैकेट को डेस्टिनेशन तक, जो नेबरहुड डेस्टिनेशन है वहां तक उसको पहुंचा देता है. दिस हेल्प्स टू रिड्यूस चांसेस ऑफ कोलिजन by means the arrangement of token. To a large extent you will be able to reduce the chances of collision. All the traffic flow in only one direction at very high speed. ठीक, हम लोग ने अभी पहले डिस्कस भी किया है. डायरेक्शन आप सेट कर लेते हैं, बाय डिफॉल्ट इट इज क्लॉकवाइज, बट यू कैन आल्सो सेट एज एंटी क्लॉकवाइज एज पर योर रिक्वायरमेंट. बेटर परफॉर्मेंस देन बस टोपोलॉजी. There is no need for network server to control the connectivity between workstation. As you can say that the comparison of star topology, where central networking devices is placed to control the you can say the working and the capacity of the workstation. There is no this type of here. Additional components do not affect the performance of network in comparison with star topology, where additional networking devices or the other workstation will affect the performance. It is not do that. It does not affect the performance of additional component in the ring arrangement. Each computer has equal access to resources. क्योंकि सबका टाइम आता है, सबको टोकन मिलेगा, एक रेगुलर इंटरवल के पास टोकन जरूर आएगा सबके पास, और सबको इक्वली वेटेज रहता है. इन स्पाइट ऑफ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एट्रीब्यूट्स ऑफ रिंग टोपोलॉजी, देयर आर आल्सो सम लिमिटेशन और यू कैन से दैट डिसएडवांटेजेस ऑफ रिंग टोपोलॉजी. फर्स्ट one broken workstation can create problem for the entire network. This is the big, you can say that the disadvantage. Moving, adding and changing the devices can affect the network. Communication delay is directly proportional to number of nodes in the network. Communication delay is directly proportional to the number of nodes in the network. Bandwidth is shared in all links between devices. It is more difficult to configure than a star.
स्टार टोपोलॉजी के कंपैरिजन में इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कॉन्फ़िगर रिंग टोपोलॉजी. So these are some limitation and disadvantages of ring topology. Now come to the application of ring topology. Ring topologies are often found in office building. It is also used in school for networking. Today, high-speed LAN made this topology less popular. Now come to the another type of topology which is known as mesh topology. Mesh topology में लगभग all nodes are connected with each other. Generally, you can say that all nodes are connected with each other. So by diagram, you are able to see or understand the configuration of mesh topology. What are mesh topology? A mesh network is a network topology in which each node called a mesh node. In the mesh topology, each node called a mesh node, or you can also say that only mesh relays data for the network. All nodes cooperate in the distribution of data in the network. A mesh network can be designed using a flooding technique or a routing technique in the networking or routing technology. There are various characteristics, or you can say that the advantages of mesh topology. So data can be transmitted from different devices simultaneously. This topology can withstand with high traffic. If one of the components fail, there is always an alternative present. I already show in the diagram that there are each and every node connected to other node, so there is always available an alternative path to reach the other station. If one link is failed, you can opt with another link. There is different alternatives available in the entire network. Data transfer does not get affected. Already, this is the previous points. It is extension of, you can say that the previous point, that data transfer does not affected by using this type of network configuration. Expansion and modification in topology can be done without disrupting other nodes. You can also expand, you can add more node, you can also split the extra node, and modification in topology can be done without disrupting other nodes. This can be done very easily. In spite of different characteristics and various advantages of mesh topology, there are slight and few disadvantages of mesh topology. First one, there are high chances of redundancy in many of the network connections. Overall cost of the network is way too high as compared to other network topology, because I already said in context of mesh topology that each and every node connected to other nodes. So the required length of wire is increased. If you compare from bus topology, ring topology or star topology, the length of cable is too much required to connect all nodes with other nodes. Setup and maintenance of this topology is also very difficult. So in where if any workstation damaged, it is not working in absolute form, so it is very difficult to configure or recognize that type of problem. It is very complex to know this type of topology or understand the construction of this type of topology for a vast network. Application of mesh topology. First one is the telephone regional office. जो कि टेलीफोन का हम लोग का जो एक्सचेंज होता है वो मेश टोपोलॉजी पे ही बेस्ड होता है. मेश टोपोलॉजी इज वेरी इफेक्टिव यूज्ड इन
यू कैन से दैट मेश टोपोलॉजी टेलीफोन एक्सचेंज में सबसे ज्यादा यूज होती है, एंड वाइड एरिया नेटवर्क, वर्ल्ड वाइड वेब की बात करते हैं, बैन की बात करते हैं, देन इट इज आल्सो यूज्ड इन वाइड एरिया नेटवर्क। बाकी सब में जो है आपकी लैन में यूज होती है टोपोलॉजी, लेकिन जहां बैन की बात होती है वहां पे मेश टोपोलॉजी आप यूज करते हैं। सो दिस इज द एप्लीकेशन। एप्लीकेशन जरूर याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जा सकता है। नाउ कम टू द ट्री टोपोलॉजी। बिफोर discussing the tree topology, all are required to mark your attendance into chat box. अभी क्लास लीव नहीं करिएगा, टाइम अभी है, ये टॉपिक डिस्कस किया जाए। जल्दी से करिए। Only 37 students mark their attendance. और इसको इसी साथ पढ़ते चले जाइए, इसके लिए अलग से समय ना निकालिए, इन्हें अब आप अपना अलग से पढ़ेंगे। यहाँ पे जब अगर ये रिवाइज हो रहा है तो आप भी इसको रिवाइज करते चलिए, समझ रहे हैं? इसके लिए कोई अलग से समय नहीं आएगा। So, tree topology. In the tree topology, you can see that all the nodes are arranged into hierarchical or the parent-child relationship method. ठीक है, ट्री हम सब लोग ने देखा है, पेरेंट चाइल्ड दिस इज द मेन रूट है, उसके बाद ये फर्दर उसके चाइल्ड है, और उसके बाद ये फर्दर उसके चाइल्ड है। दिस इज जनरल ट्री, दिस इज नॉट बाइनरी ट्री, दिस इज जनरल ट्री। दैट्स व्हाई more than 2 children are placed or hanged with a particular node. Tree topology integrates the characteristics of star and bus topology. The number of star network are connected using bus. Main cable seems like a main step of a tree and other star network as the branches. So you can understand in this concept. Repeating again, main cable seems like a main stem of tree and other star network as the branches. It is also called expanded star topology. You can say that this is expanded star topology. So it is also advised to all of you know the alternative name of tree topology. Ethernet protocol is commonly used in this type of topology. Advantages of tree topology: it is an extension of star and bus topology. So in network where these topologies can't be implemented individually for region related to scalability, tree topology is the best alternative. जहां पे आप पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप या हायरार्किकल अरेंजमेंट करना चाहते हैं तो ये सबसे आइडियल टोपोलॉजी होती है। एक्सपेंशन ऑफ नेटवर्क इज पॉसिबल एंड वेरी इजी। डिवाइड द होल नेटवर्क इनटू सेगमेंट्स, means you can say that star networks which can be easily managed and maintained. Error detection and correction is very easy. Each segment is provided with dedicated point to point writing to the central hub. Means it is very easy to understand the any fault of this topology. If one segment is damaged, other segment will not affected. आप लोगों ने डायग्राम में भी देखा, अगर एक साइड पूरा आपका कनेक्शन आ रहा है, you can say that it is also type of parallel connection. In electricity, there are two type of connection, serial and parallel. This is also known as the parallel connection. Disadvantages of tree topology: because of its basic structure, tree topology relies heavily on the main bus cable. If it breaks, whole network is crippled or infected.
क्योंकि मेन केबल है, अगर वो आपकी डिस्टर्ब हो गई तो पूरा नेटवर्क आपका बर्स्ट हो जाए. एज मोर एंड मोर नोड्स एंड सेगमेंट्स आर एडेड, द मेंटेनेंस becomes sometimes difficult. Scalability of network depend on the type of cable, किस तरह की केबल आप यूज करते हैं. We will also discuss about the transmission media, उसमें हम लोग केबलिंग के बारे में पढ़ेंगे. So now comparison between topologies. First topology use one main cable to which all nodes are directly connected. While in star topology, each computer is connected to central arm using a point-to-point connection. Ring topology, the computer in the network are connected in a circular fashion or the circular mode. Mesh topology, every node has direct point-to-point connection to every other node. And the tree topology combines multiple star topologies onto a bus. Hub devices for each star topology are connected to that bus. These are the comparison. तो कभी कभी comparison के लिए भी आता है, तो आप in a glance you can understand all the properties of all the techniques or topologies at one glance. So this is all about network topologies. ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकता है. आई विल आल्सो शेयर दिस पीपीटी. ठीक है, अब ये टॉपिक आप लोग का सबका प्रिपेयर हो जाना चाहिए. ओके, ठीक. बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू. वेलकम ऑल ऑफ यू.